आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो चेक डिसऑनर कंप्लेंट में, और जैसे ही लर्नड मजिस्ट्रेट ने आपकी कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया और समनिंग ऑर्डर इशू करे, तो एक्यूज पर्सन पहुंच गए डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन करवाने के लिए। और उन्होंने क्वेश्चन का कोर ग्राउंड ये लिया है कि आपको ऑथराइजेशन पावर्स ही नहीं है, यू आर नॉट having any knowledge about the transactions which led to the filing of this NI complaint. So because of this, learned magistrate has erred while issuing the summoning order against the accused person. तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी जो है वो नेचुरल पर्सन तो रहेगी नहीं, और अगर उसको अपना केस रिप्रेजेंट करना है तो वो केस हमेशा एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करवा सकती है। मैनी केसेस में ऐसा भी होता है कि जब ये चेक डिसऑनर्ड होता है तो उस टाइम पे जो व्यक्ति था जो देख रहा था पूरी ट्रांजैक्शंस को, वो रिजाइन कर देता है और उसकी जगह पर नया व्यक्ति भी ज्वाइन कर लेता है। तो उस केस में क्या कंपनी के पास अथॉरिटी लेटर नहीं रहेगी टू ऑथराइज द न्यू ज्वाइनी टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द ट्रायल कोर्ट? आइए हम इन क्वेश्चंस का आंसर जो है समझने की कोशिश करेंगे इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि 3 जजमेंट है इन द मैटर ऑफ TRL क्रोस्की रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड वर्सेस SMS एशिया प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में ये जो TRL क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड है वो कंप्लेनेंट थी, क्योंकि जैसे ही ट्रायल कोर्ट के द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया इस मैटर में और समन्स इशू करे गए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंचा एक्यूज्ड कंपनी जो कि SMS एशिया प्राइवेट लिमिटेड थी, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी इस कंप्लेंट को। उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो TRL क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड है वो पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। इस जजमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रीफ फैक्ट्स एंड टाइमलाइंस। ऑनरेबल हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कोर इशू था, जिसके बाद हम गो थ्रू करेंगे एनालिसिस के पोर्शन को, एज वेल एज हम फाइनली अंडरस्टैंड करेंगे कि इस मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑपरेटिव जजमेंट भी क्या आया, और बीइंग ए कंप्लेनेंट और बीइंग एन एक्यूज्ड पर्सन आपको इस जजमेंट से क्या लर्निंग्स मिलती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट NI जजमेंट्स को समझना चाहते हो तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड फील फ्री टू शेयर दैट प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड्स और हु आर गोइंग थ्रू द चेक डिसऑनर मैटर। लेट अस नाउ कम बैक एंड फर्स्टली अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इस मैटर में लगभग 7 चेक्स थे, जिसमें टोटल अमाउंट जो थी लगभग 1.1 CR की अमाउंट थी, जो कि डिसऑनर्ड हो गए टोटल अमाउंट ऑफ द चेक्स में। ऑब्वियसली क्योंकि कंपनीज इन्वॉल्व थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन्वॉल्व थे, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया। चेक जब डिसऑनर्ड हुए एप्रोप्रिएट लीगल नोटिस भी भेजा गया, फिर जो एक्यूज कंपनी है उसको लीगल नोटिस रिसीव भी हुआ। उसके बाद जब ये कंप्लेंट फाइल करी गई तो ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कंप्लेंट का और समनिंग ऑर्डर इशू कर दिए फॉर द एक्यूज कंपनी। एक्यूज कंपनी ने डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया अंडर 482 ऑफ द CRPC एंड चैलेंज द summoning orders directly. So now let us first understand the findings of the Honorable High Court order. Honorable High Court के सामने जो accused कंपनी थी वो इसलिए अप्रोच किया, जो कोर ग्राउंड था उनका ये था कि that the complaint was filed by an incompetent person without requisite averments in the complaint. In other words, जो कंप्लेनेंट है उसने ये जो कंप्लेंट फाइल करी है उस व्यक्ति के फेवर में कोई एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन, वैलिड ऑथराइजेशन फाइल नहीं करी है, और एज वेल एज जो कंप्लेंट है उसके अंदर रिक्विजिट एवर्मेंट्स नहीं है कि इस व्यक्ति को नॉलेज थी, इस व्यक्ति को अबाउट ही वाज अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन डिटेल्स,
एंड दैट इज वाई जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट है उन्होंने जो कॉग्निजेंस लिया और समनिंग का ऑर्डर इशू करा, दैट समनिंग ऑर्डर लायबल टू बी क्वेश्ड। जब ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास फाइनल जजमेंट के रूप में बाहर आया, तो देन ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो की फाइंडिंग्स थी, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट relied upon the judgment of AC Narayana versus State of Maharashtra. And key findings in respect of this matter, agar finding number first ko, if we look at it, the Honorable High Court held that there is no mention in the complaint or affidavit as to when and in what manner the company had authorized its general manager to represent the company टू फाइल द कंप्लेंट, कि कंप्लेंट के अंदर कोई ऐसा डिस्क्लोजर नहीं मिला, कोई ऐसा फैक्चुअल नरेशन नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि कंपनी ने अपने जनरल मैनेजर अकाउंटिंग जिसके साइन थे कंप्लेंट के सारे एफिडेविट्स वगैरह पे एंड रेलेवेंट फॉर्म्स के ऊपर, उस व्यक्ति को ऑथराइज करा है। सेकंड, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि जो जनरल मैनेजर अकाउंटिंग है, जो ये पर्सन है, ही हैड नो नॉलेज अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड ही वाज नॉट ए विटनेस टू द ट्रांजैक्शन। इस कारण से अब हाउ कैन वी रिलाई अपॉन दिस कंप्लेंट व्हेन an non-authorized person without having knowledge about the transaction details has filed this complaint? How can we actually rely upon that witness? Third and foremost, very critical is, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर को तो पावर्स दी हैं टू फाइल दी सूट और टू प्रोसिक्यूट सम लीगल मैटर्स, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने इस मैटर में सब डेलीगेट कर दी अपनी पावर्स को, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को सब डेलीगेशन करने की पावर्स नहीं दी। तो इस कारण से this person has absolutely no authorization to file this complaint, and that is why this complaint is liable to be quashed. So these are the three key findings on the basis of which the Honorable High Court has quashed the summoning order. Aggrieved by this quashing order, the appellant, that is the complainant, has challenged this order before the Honorable Supreme Court. So the key question before the Honorable Supreme Court was that whether the complaint filed by the appellant herein under section 1838 of the NI Act is in accordance with the requirements of the section 142 of the NI Act, because 142 of the NI Act lists down the various requirements specifically when a company is involved in a check bounce complaint. So while going through this section 142, Honorable Supreme Court also relied upon the AC Narayana judgment, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी रिलाई किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो की क्वेश्चंस थे इस एसी नारायणा की जजमेंट में, मल्टीपल क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड जिसके हमने आंसर्स साइमल्टेनियसली अपेयर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एसी नारायणा में फ्रेम किया गया, दैट वेदर ए पावर ऑफ अटर्नी होल्डर can sign and file a complaint petition on behalf of the complainant. Alternatively, whether the eligibility criteria prescribed by the section 142A of the NI Act would stand satisfied if the complaint petition itself is filed in the name of payee or the holder in due course of the check. So इसका आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसी नारायणा में ये दिया कि filing of a complaint under section 138 of the NI Act through power of attorney is perfectly legal and competent. So what does this mean is, अगर complainant ने इस केस में किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया है तो then power of attorney नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि fully show करे कि yes, this person is duly authorized by the complainant to file the complaint, and Honorable Supreme Court held that section 142 जो है
that empowers the complainant to file the complaint through its power of attorney holder. Now, second is whether a power of attorney holder can be verified on oath under section 200 of the CRPC code. इसका आंसर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफर्मेटिव में दिया that the power of attorney holder can depose and verify on oath before the court in order to prove the contents of the complainant. However, the power of attorney holder must have witnessed the transaction as an agent of the payee holder in due course or possesses due knowledge regarding the said transaction. So आंसर में क्या है, या तो उसने खुद विटनेस किया हो उस ट्रांसैक्शंस को या उसके बारे में ड्यू नॉलेज हो. अगर दोनों में से एक फैक्टर इज गेटिंग सेटिस्फाइड तो देन वो जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर को जो ऑथराइजेशन दे रखी है दैट इज गोइंग टू बी अ वैलिड ऑथराइजेशन एंड दैट कंप्लेंट इज अ वैलिड कंप्लेंट इन व्यू ऑफ सेक्शन 142. Now let's move to the question number 21.3 and 21.4, third and fourth question, which are of the same scope. इसके अंदर अगर हम देखें, the scope is this: whether the specific averments as to the knowledge of the power of attorney holder in the impugned transaction must be explicitly asserted in the complaint. पहला क्वेश्चन ये. अगर हम कीवर्ड देखें, की फ्रेज देखें, स्पेसिफिक अवर्मेंट्स एंड प्लस सेकेंड फ्रेज इज एक्सप्लिसिटली असर्टेड. ओके, सो जब हम इन दोनों फ्रेजेस को देखने की कोशिश करें तो देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? द आंसर इज दैट इट इज रिक्वायर्ड बाय द कंप्लेनेंट टू मेक स्पेसिफिक assertion as to the knowledge of the power of attorney in the transaction explicitly in the complaint, and the power of attorney who has no knowledge regarding the transactions cannot be examined as a witness in the case. So the question number 3 का जो आंसर ये है कि yes, specific averments complaint में आनी चाहिए कि yes, मेरे power of attorney को होल्डर को ड्यू नॉलेज थी, he was a witness to the transaction. अगर वो स्पेसिफिक एवर्मेंट्स एक्सप्लिसिटली नहीं है कंप्लेंट में तो देन द कंप्लेंट में फॉल. And the fourth question is that if the power of attorney holder fails to assert explicitly his knowledge in the complaint, then can the power of attorney holder verify the complaint on oath on such presumption of knowledge? क्या presumption of knowledge का कॉन्सेप्ट आएगा अगर एक्सप्लिसिटली कंप्लेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द पावर ऑफ अटर्नी हु हैज नो नॉलेज regarding the transactions cannot be examined as a witness in the case. And इसी एसी नारायणा के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 33.5 में ये भी हेल्ड किया that the functions under the general power of attorney cannot be delegated to another person without specific clause permitting the same in the power of attorney. So many times अगर आपकी कंपनी ने आपके फेवर में पावर ऑफ अटर्नी दिया है और अगर वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है एंड उसके अंदर सब डेलीगेशन का क्लोज नहीं है एंड यू ऑथोराइज समवन एल्स to give the authority to file the complaint, then your complaint is liable to be dismissed because specific clauses for further delegation needs to be there within the power of attorney clauses. So in view of the principles disclosed in the AC Narayana judgment and other legal precedents, the Honorable Supreme Court consolidated the positions of the law. First is that the complainant should be the company and which should be represented by an employee who is authorized. That was the first rule, thumb rule. Second is that the complainant who is represented by the authorized person must have the knowledge. That is a very sufficient criteria. The employment of the term specific assertion to the knowledge of the power of attorney holder and such assertion about the knowledge should be said explicitly as stated in
AC Narayana, इसका मतलब ये नहीं है that there is going to be a some pre-built format जिसके अंदर complainant को data को fill करना है. If you are disclosing averments in relation to the facts जो explicitly categorically ये disclose कर दें कि yes this person is an authorized person, this person is a have specific knowledge or was witness to the transaction. So अगर आपकी complaint में ये averments हैं तो then such averments are necessarily sufficient है for the London trial court to take cognizance and take appropriate steps, like for example issuance of a summons to the accused person. Now, having understood the principles from the aspects of complainant, अब बारी आती है accused person के perspective में बात करने की. So, for the accused perspective, Honorable Supreme Court held in this judgment that it would be open for the accused to dispute the position and establish the same during the course of trial. That is a very, very important thing we must realize. अगर आप एक्यूज पर्सन के पर्सपेक्टिव से हो तो इस जजमेंट में 3 जज बेंच की जजमेंट कैटेगोरिकली सेइंग दैट इफ यू हैव एन इशू over the authorization, over the knowledge of the authorized person, then these issues can be settled only when you raise them during the course of trial. Filing a quashing petition on the basis of that the complainant has not appropriately authorized its representative, or the authorized person does not have proper knowledge or due knowledge about the transaction that led to the issuance of the checks, then such issues needs to be dealt only at the trial level, not by invoking 482 jurisdiction of the Honorable High Court. Now, having understood about the various principles, Honorable Supreme Court pulled out the facts of the current matter and started applying these principles on the current facts. If you see the first fact कि इसमें जो कंप्लेंट फाइल करी गई है वो कंपनी के नाम पे ही फाइल करी है थ्रू दी ऑथराइज्ड पर्सन मिस्टर Shubhasis Kumar Das, who is a general manager of accounting division. The first condition gets satisfied. Second, जो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी देखा था, द की इशू वाज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑथराइज किया टू फाइल द कंप्लेंट, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने फर्दर ऑथराइज कर दिया मिस्टर शुभाशीष कुमार दास, जो कि जनरल मैनेजर अकाउंटिंग है, टू फाइल दी कंप्लेंट. हाईकोर्ट का मानना यह था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजिंग डायरेक्टर को सब डेलीगेट करने की पावर्स नहीं दी. दैट इज व्हाई द ऑथराइजेशन इशूड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू मिस्टर शुभाशीष कुमार दास is not a valid authorization letter. Whereas Honorable Supreme Court has gone through the various documents. One was the Annexure P17, which is the authorization by the managing director in favor of the Mr. Das. And the second document was Annexure P16, in which the managing director, apart from himself being the key personal managerial person, has also been delegated the power by the board of directors. इस डॉक्यूमेंट को जब एनालिसिस किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट मैनेजिंग डायरेक्टर इज आल्सो एम्पावर्ड टू डेलीगेट where necessary and to the extent required any of the powers delegated to him to his subordinate officers. This Annexure P16 enables the Honorable Supreme Court to come to a conclusion that the authority issued by the managing director to Mr. Das, who is a general manager accounting, is a perfectly valid authority. That was the key finding of the Honorable Supreme Court in this appeal proceeding. Another aspect जो raise किया गया था that the
authorized person is an incompetent person. He has no knowledge about the transactions. He is not a witness to the transaction. So Honorable Supreme Court went through the various documents. One was the document P1, in which there was the sign of the witnesses के अंदर जो साइन थे उसके अंदर मिस्टर दास के ही साइन थे, who was the general manager commercial at that time. Secondly, there was also another document जो कि reconciliation of the account spanning for of the period, spanning the period from so and so, depicts that the same was attested by the representatives of the both the companies. Appellant company जो थी, the complainant company was represented by Mr. Das only, who has put up the signatures. Thirdly, इस चेक डिसऑनर केस में जो लीगल नोटिस इशू करा गया था, the legal notice were issued by Mr. Das only, who has served the notices on behalf of the appellant company to the respondent company. So these pointers, that is the agreement जो हुआ जिसमें मिस्टर दास के सिग्नेचर थे, रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो सिग्नेचर थे, एंड द नोटिस इशूड बाय द एप्लीकेंट कंपनी, उसमें मिस्टर दास वाज द की पर्सन involved in all these documents, which established that yes, Mr. Das has the due knowledge about the transactions. So जो इनकम्पिटेंट पर्सन का मैंडेट था, वो जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि ही इज एन इनकम्पिटेंट पर्सन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को भी सेटिस्फाइड किया. फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलाइड अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द वेरियस एफिडेविट्स जो कि मिस्टर दास ने फाइल करे थे. फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आउट in the affidavits a common language that they represent through its general manager Mr. so and also authorized by the company to file this complaint. Another affidavit, I so and so, Mr. Das so, and please see here, I am the general manager of the appellant company and competent to file this complaint. And please see now this thing, the facts stated above in this complaint are true to the best of my knowledge, belief, and basing on the relevant document. So categorically, Mr. Das on oath has made submissions before the London trial court that he is aware of the various contents of the complaint. He is aware of the various documents filed along with the complaint. So after going through the various affidavits, documents, and averments found in the complaint, the Honorable Supreme Court came to a conclusion. If we refer to the operative portion, so the court found that the quashing of the complaint at the threshold was an unjustified by the Honorable High Court, and thus जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो सेटिस्फाइड कर दिया गया. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट considered that the complaint was filed in 2015, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अब ट्रायल को 6 महीने के अंदर अंदर खत्म किया जाए. And also Honorable Supreme Court imposed the cost of ₹1 lakh to the accused company, which needs to be paid to the complainant company. एंड अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें इस जजमेंट में जो कैटेगोरिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंपिंग कर दी, फर्स्ट इज दैट स्पेसिफिक अवर्मेंट्स अबाउट कि दिस पर्सन इज द ऑथराइज्ड पर्सन और इसको नॉलेज है ट्रांसैक्शन की और ही दिस ऑथराइज्ड पर्सन इज अ विटनेस टू द ट्रांसैक्शन. ये जो स्पेसिफिक अवर्मेंट्स है उसका कोई रेगुलर टेम्पलेट नहीं होने वाला. द ट्रायल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट्स हैं, they have to go through the complaint, they have to go through the documents, they have to go through the affidavits to ascertain whether the requirement जो अंडर सेक्शन 142 है वो मीट हो रही है या नहीं हो रही. बट yes, averments needs to be there and explicitly needs to be there. उसका कोई टेम्पलेट नहीं होगा. सेकेंडली, अगर एक्यूज पर्सन के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो अगर एक्यूज पर्सन ने ऑथराइजेशन के इशू को चैलेंज करना है या ये चैलेंज करना है कि भाई ऑथराइज पर्सन को ड्यू नॉलेज नहीं है ट्रांसैक्शन की डिटेल्स का, वो विटनेस ही नहीं है,
तो then this can be done only at the trial stage. This cannot be done at the quashing stage, जिसमें आप simply ट्रायल को बाईपास करने की कोशिश करो और इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करके क्वेशिंग पिटिशन फाइल कर दो. So that's the overall conclusion which we can derive from this judgment for the complainant perspective also and for the accused person perspective also. And in case if you have any specific questions regarding the authorization के रिलेशन में या ड्यू नॉलेज ऑफ द ऑथराइज पर्सन, तो देन आप अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल कर सकते हैं info@nyaytantra.com पे. हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करेंगे इन ए रीजनेबल टाइम. आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अदर स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो अप्लाई द लर्निंग्स ऑफ दिस जजमेंट in their current ongoing NI matters. And thank you once again for going through this video. Jai Hind.